Hi everyone, this is Shruti Pandey from the Department of Chemical Engineering at IIT Kanpur, and I welcome you all to the lecture number 5 of alcohols, phenols and ethers in chemistry of class 12. So in the previous lecture, we were discussing about the preparation of alcohols from the carbonyl compounds, and we firstly discussed about the reduction of the aldehydes and the ketones, and then we moved on to the reduction of the carboxylic acids and the esters to form the alcohol. And we discussed several kinds of reducing agents like lithium aluminum hydride, that is LiAlH4. It is a very strong reducing agent. Okay, it is used for the reduction of carboxylic acids to primary alcohols. Okay, but because it is very expensive chemical, it is generally not used in the industry. Okay, because it is not economical for those people to use it. Therefore, we use a different method, a different way for the preparation of alcohol. What we do is we first convert the carboxylic acids to esters, okay, by the reaction of different kind of alcohol, and then we reduce those esters, the esters which are formed in the first step. We reduce those esters by reacting them with hydrogen in presence of a catalyst, and then we get two different kinds of alcohol. Okay, so this is a more preferred method over the carboxylic acid reduction. Then we discuss about the preparation of alcohols from Grignard reagent. Okay, what is Grignard reagent? It is RMgX. Okay, so it has two steps. That is, first step is the nucleophilic addition of Grignard reagent to the carbonyl group. And step number 2 is the hydrolysis of the adduct which is formed in the first step. This hydrolysis gives the final alcohol. ठीक है, तो वी डिस्कस द सिंपल मेथड कि ये तो दो स्टेप्स हो गए, ठीक है, लेकिन अगर हमें डायरेक्टली प्रोडक्ट बनाना है कि वी आर गिवन द aldehyde and the ketone and we want to directly make the product. So what we will do is, I told you a simple technique. I am just drawing it. I told you a simple technique that suppose this is the double bond O, ठीक है, and you have to react it with the Grignard reagent. So उस Grignard reagent में you will have R NGX, right? So what will you do is you will just, ये जो double bond वाला O C double bond O है, what you will do is you will convert this O to the alcohol, मतलब hydroxy group OH. You will remove this double bond and you will add one more group to this carbon. This is R. This is not K, sorry. This is R, and ये जो R है, it is taken from the Grignard region. मतलब ये वाला R ही यहाँ पे आ गया है, ठीक है, तो बस इतना करना है. So the thing is, जितना भी complicated ketone या फिर aldehyde आपको दे दिया जाए in exams or in anywhere, तो आपको you don't have to get scared looking at that complicated structure or a complicated formula. You just have to look कि आपको जो भी C डबल बॉन्ड O है वहां पे आपको R ग्रुप ऐड करना है और हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा देना है. दैट्स इट. The rest of the compound will remain the same. Okay, so this is the best technique for the reaction using Grignard reagent for the formation of alcohol. And we also discussed that methanol gives primary alcohol, other aldehydes will give secondary alcohol, and the ketones will always give tertiary alcohol. Okay. Now, we also discussed the preparation of phenols, and we discussed four techniques, four methods. First from the haloarenes, second from benzene sulfonic acid, third from the diazonium salts, and fourth from cumene. And at the end, we concluded that cumene is the most industrially used method worldwide for the preparation of phenol. It is because, first of all, we don't need any harsh conditions for this reaction, and secondly, because we are getting two important products.
from this reaction. The first one is phenol and second one is acetone. ठीक है? And both of these products are very important industrially. बहुत सारे applications हैं इन दोनों के, and that is why this is the most preferred method for the preparation of phenols. ठीक है? So now we are going to discuss about the physical properties of all these compounds. First we will go to alcohols and phenols. So here it is, physical properties. Now see, the properties of alcohols and phenols, they are mainly due to the hydroxyl group. ठीक है भाई, क्या होता है, ROH ले लो चाहे AROH ले लो, you have two things. One is the hydroxy group and other is the alkyl or the aryl group. ठीक है, so what happens is कि the type or the nature of the alkyl or the aryl group, it can change the these physical properties. ठीक है, so first of all we will be discussing boiling point. कि different kinds of alcohols और phenols में what is the trend of boiling point, कैसे decrease होता है, कैसे increase होता है, what are the reasons behind these changes. So see, I'll be dividing this in different parts ताकि whenever you are given a question you don't get confused. ठीक है, so you just have to listen what understand what each part says. So the first part says that increase in the number of carbon atoms, it increases the van der Waals forces. ठीक है, जब number of carbon atoms बढ़ेंगे, ठीक है, तो molecular mass बढ़ेगा. When the molecular mass will increase, so the van der Waals forces will increase. ठीक है, and when the attractive the interactive forces will increase, so the boiling point will also increase. ठीक है, so what was the conclusion? Increase in carbon atoms increase the boiling point. This is BP means boiling point. ठीक है, because of the increase in the van der Waals forces. ठीक है, तो ये जो ट्रेंड है कि physical property is increasing, this boiling point is increasing with the increase in the carbon atoms. ये सिर्फ alcohols और phenols के लिए ही applicable नहीं है. When you studied about the haloalkanes and when you will be studying about different other functional groups that is alcohols, that is aldehydes and ketones और carboxylic acids, वहां पे भी you'll see the same trend. ठीक है, तो there are not many different trends. काफी चीजें जो हैं वो सारे functional groups के लिए similar होती हैं. ठीक है, तो this is one important trend that you should remember. Now, second point that you need to understand is कि when you increase the branching in the carbon chain, मतलब अभी तो जब आपने कार्बन एटम्स बढ़ाए, so you are increasing the carbon atoms in a linear fashion, मतलब नॉर्मल पेंटेन या फिर नॉर्मल हेक्सेन, एक सिंगल स्ट्रेट चेन बात हो रही है. ठीक है, अभी क्या है, when you are increasing the branching, मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर सेम. ठीक है, लेकिन यू हैव डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स, मतलब हम वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स. ठीक है, जैसे होता है एक नॉर्मल पेंटेन होता है, फिर आइसोपेंटेन होता है, टर्ट पेंटेन, जैसे कि ब्यूटेन के केस में नॉर्मल ब्यूटेन होता है, आइसोब्यूटेन होता है, देन यू हैव टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप. ठीक है, सो दीज आर द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स. तो whenever the number of carbon atoms are same but you are increasing the branching of the carbon chain, that will decrease the surface area. ठीक है, जब surface area कम होता है तो van der Waals forces भी कम होते हैं. जब branching बढ़ेगी, surface area कम होगा, van der Waals forces भी कम होंगे, so that will decrease the boiling point. ठीक है, तो another point you need to remember is increase in branching. यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है कि कार्बन एटम्स आर सेम, मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है बट ब्रांचिंग बढ़ रही है. इट विल
decrease the boiling point. Okay. Now, third point says the boiling point of alcohols and phenols, it is higher than the hydrocarbons, ethers, haloalkanes, haloarenes of the comparable molecular mass. ठीक है, तो यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज यू नीड टू रिमेम्बर इज वी आर टॉकिंग अबाउट द कंपाउंड of the different compounds of the comparable molecular mass. मतलब exactly same नहीं होगा but molecular mass will be approximately same. ठीक है, उसी रेंज में लाया करेगा. ठीक है, 40 हो सकता है, 43 हो सकता है, 45 हो सकता है. ठीक है, उससे ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए. ठीक है, so these are the compounds of the comparable molecular mass. So when you are comparing alcohols and phenols with hydrocarbons, ethers, haloalkanes and haloarenes. So then the boiling point of the alcohols and phenols is more. Okay. So I'll give you one example which you'll remember. I'm taking a alcohol here. This is ethanol. Okay. Then I'm taking an ether, which is methoxymethane. And then I am taking a hydrocarbon, which is propane. And I have chosen these three compounds because they have similar molecular mass. ठीक है, तो let's first I am writing down the molecular mass of these compounds. You can आप लोग खुद भी निकाल सकते हो, but I'm just for the sake of clarity. ठीक है, so as you were seeing कि इनके molecular masses जो हैं approximately same हैं, but the boiling points which are observed are very different. This is 351 Kelvin. This is 248 Kelvin and this is 231 Kelvin. ठीक है, तो obviously you can see कि अगर हम ट्रेंड बनाए बॉइलिंग पॉइंट्स का तो this will be the trend. ठीक है, so that means कि alcohols they have higher boiling point as compared to the hydrocarbons and the ethers. ठीक है, so this is the important point. Okay, so now what is the reason behind this? कि molecular mass what we discussed was कि जब molecular mass बढ़ता है तो वॉन्डर वॉल फोर्सेस सेम होने चाहिए, वॉन्डर वॉल फोर्सेस भी इंक्रीज होते हैं. बट इन दिस केस, in this last point we see that when these have the comparable molecular mass, so they should have the similar van der Waals forces और उस हिसाब से they should have the similar boiling points also. But ऐसा नहीं है. So what is the reason behind this is so this is due to the presence of intermolecular hydrogen bonding in the case of alcohols and phenols. ठीक है, तो अल्कोहल्स और फिनॉल्स में आपस में मॉलिक्यूल्स इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर लेते हैं जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट, मतलब क्योंकि अब क्या है, पहले से वॉन डेर वाल्स फोर्सेस थे, मतलब ईथर और हाइड्रोकार्बन के केसेस में यू ओनली हैव वॉन डेर वाल्स फोर्सेस जिन्हें की ब्रेक करना है. ठीक है, बट इन द केस ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स यू ऑल्सो हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग. वॉन डेर वाल्स फोर्सेस के साथ में यू ऑल्सो हैव टू ब्रेक दैट हाइड्रोजन बॉन्डिंग फोर्सेस, जिसकी वजह से यू नीड मोर टेम्परेचर और मोर एनर्जी और दैट इज व्हाई द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस. तो द रीजन इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इंटरमॉलिक्यूलर मतलब व्हेन दिस इज बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स. ठीक है, और जब बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो इसका मतलब दिस इज बिटवीन द टू एटम्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द सेम मॉलिक्यूल. ठीक है, so these are the 3 points that you should remember while you are dealing with the questions regarding the related to the boiling points. Now coming to the another important physical property, that is solubility. Okay, so solubility of alcohols and phenols in the water is because of their ability to form hydrogen bonding with water. ठीक है,
तो इसमें क्या है, अभी हमने बॉइलिंग पॉइंट में क्या देखा कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी वो आपस में थी। ठीक है, आपस में मतलब दो फिनॉल मॉलिक्यूल्स या फिर दो अल्कोहल मॉलिक्यूल्स। ओके, तो ऐसा देखो आप कि सपोज ये आर है, ओ है, एच है। ठीक है, ये अल्कोहल है, आर है, ओ है, एच है। ठीक है, तो दीज आर टू डिफरेंट अल्कोहल मॉलिक्यूल्स एंड इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो ऐसे होती है, एच और ओ। ठीक है, तो ये जो डॉटेड लाइन है ना, ये डिनोट कर रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये केमिकल बॉन्ड नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो दिस इज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल। ठीक है, तो ये जो चीज होती है, ये वाला केस होता है जब हम बॉइलिंग पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे होते हैं। ठीक है, जब हम सॉल्युबिलिटी डिस्कस कर रहे हैं तो वी आर डिस्कसिंग द हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द अल्कोहल एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी के केस में हम कैसे, अगर इफ वी वांट टू डिनोट दिस विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, तो हम लोग क्या बोलेंगे, सपोज वी हैव दिस आर ओ एच। ठीक है, ये अल्कोहल है एंड वी हैव मिक्स्ड दिस अल्कोहल विद वाटर। तभी तो बताएंगे कि वो सोल्यूबल है कि नहीं है। ठीक है, तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसकी वजह से ये वॉट हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगा। दिस इज अ वाटर मॉलिक्यूल, अगेन दिस इज अ हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इसका जो आर ओ एच का जो एच है, दैट विल ऑल्सो फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन आर ओ एच और वाटर मॉलिक्यूल्स में है। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे वाटर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ दो मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो यहाँ पे यू ओनली हैव वन ट्रेंड दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट ये जो ग्रुप्स होते हैं, ये जो आर ग्रुप है, ये यहाँ पे चाहे हम लोग अल्काइल ग्रुप के बारे में बात करें या फिर एराइल ग्रुप के बारे में, these both the alkyl and the aryl groups are hydrophobic in nature. Hydrophobic मतलब हाइड्रो मीन्स वाटर, फोबिक मतलब डर। ठीक है, फोबिया बोलते हैं ना किसी चीज से, व्हेन यू आर स्कैर्ड ऑफ समथिंग देन यू से दैट यू हैव अ फोबिया ऑफ दैट थिंग। सो दैट मीन्स हाइड्रोफोबिक मतलब ये जो ग्रुप्स हैं, ये जो अल्काइल और एराइल ग्रुप्स हैं, दीज आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर। मीन्स ये वाटर से रिपेल करते हैं। ठीक है, whenever they will come close to the water molecules they will repel। ठीक है, तो एक रेपलिंग फोर्स या फिर एक रेपलिंग टाइप का फोर्स is there between the alkyl and the water molecules. So that is why जब alkyl ग्रुप छोटा होगा तो ये जो फोर्स होगा ये भी छोटा होगा, repelling force. And when the size of this alkyl group is more, is large, then this repelling force it will be large. ठीक है, इसी वजह से solubility decreases with the increase in the size of these alkyl or the aryl groups. So I am writing this down because this is the only thing that you need to remember here. The solubility decreases with increase in the size of alkyl और aryl group। ठीक है, तो ये रेपलिंग फोर्स बढ़ जाता है और solubility कम हो जाता है, सिंपल। ठीक है, और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि रेपलिंग फोर्स जब बढ़ेगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो चांस है वो कम हो जाएगा। ठीक है, रेपलिंग फोर्स विल डिक्रीज द चांसेस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होगा जब मॉलिक्यूल्स पास में आएंगे। ठीक है, और जब रेपलिंग फोर्स बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल्स पास में नहीं आ पाएंगे, दैट विल डिक्रीज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड दैट विल डिक्रीज द सॉल्युबिलिटी। ठीक है, so these were the physical properties of the alcohols and phenols. Now I'll do some examples related to the boiling point. Okay, so you have to arrange the compounds which are given in order of their increasing boiling point. मतलब सबसे पहले सबसे कम boiling point and then increasing order. So I'm writing down the compound.
ठीक है. So these are 6 compounds and you need to arrange them in the increasing order of their boiling point. अब देखो क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चंस में. सबसे पहले यू नीड टू काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम. ठीक है, क्योंकि हमने क्या डिस्कस, हमने 3 पॉइंट डिस्कस किए थे. ठीक है, जो लास्ट पॉइंट था वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है. दैट इज नॉट एप्लीकेबल बिकॉज दैट वाज द कंपैरिजन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल विद ईथर्स एंड हाइड्रोकार्बन. ठीक है, तो यहाँ पे जो सारे कंपाउंड्स दैट आर गिवन टू अस दे आर ऑल द अल्कोहल. ठीक है, इनमें कोई ईथर या फिर हाइड्रोकार्बन नहीं है. So the third point is gone. Now, 2 points that remain with us, they are the number of carbon atoms and the branching. ये दो चीजें हैं that you need to remember here. सबसे पहले क्या करेंगे, मिथेनॉल. इसमें एक कार्बन एटम है. इथेनॉल, इसमें 2 कार्बन एटम है. प्रोपेनॉल, इसमें 3 कार्बन एटम है. You have butanol, you have 4 and sorry 5 pentanol. ठीक है, so that means the first point said the increase in the number of carbon atoms will increase the van der Waals forces and that will increase the boiling point. ठीक है, तो इसका मतलब methanol has the least number of carbon atoms and so it will have the least boiling point. ठीक है, so now let us write down the solution. तो सबसे पहले because we have methanol with 1 carbon atom, इसका boiling point सबसे कम होगा. Then we have 2, it will be ethanol. Then 3, we have propane 1 all. Now, अब क्या होगा, because see, butane, because 4 carbon atoms they are same. ठीक है, we have 2 compounds, butane 1 all and butane 2 all. ठीक है, अब तो सेकंड पॉइंट क्या बोला था मैंने कि when we will talk about the branching only when the number of carbon atoms are same. ठीक है, तो अब number of carbon atoms है 4 और branching is more in this. ठीक है, तो सेकंड पॉइंट क्या बोला था कि when there is a increase in branching so that will decrease the surface area and that will decrease the boiling point. ठीक है, तो ये जो butane 2 all है इसका boiling point will be less. तो let us write it down. Butane 2 all because of branching. Then we have butane 1 all and then at last we have pentanol. ठीक है, तो जब भी हमें ब्रांचिंग कंपेयर करनी है ना, तो ऑलवेज वी नीड टू कंपेयर द मॉलिक्यूल्स और द कंपाउंड्स विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. ठीक है, हम ब्यूटेन 1 ऑल को वी कैन नॉट कंपेयर इट विद पेंटेन 1 ऑल. ठीक है, अगर ब्रांचिंग कंपेयर करनी है या मतलब ब्यूटेन 2 ऑल को पेंटेन 1 ऑल से कंपेयर नहीं कर सकते. ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स शुड बी सेम. नाउ अनदर वन, पेंटेन 1 ऑल and butane pentanol ethoxyethane. ठीक है, तो हियर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो और सारे कंपाउंड्स हैं दे आर ऑल डिफरेंट. ठीक है, अल्कोहल, हाइड्रोकार्बन, एल्डिहाइड एंड ईथर. ठीक है, तो इन दिस केस द ओनली पॉइंट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज द थर्ड वन, दैट यू नीड टू कंसीडर इज थर्ड वन. ठीक है, फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है. तो व्हाट इज द थर्ड पॉइंट से दैट इफ यू हैव कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, if you have comparable molecular mass, so the boiling point of alcohol and phenol is more than that of ether and hydrocarbon. ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन का सबसे कम होता है, then you have ether and then you have alcohol or phenol. ठीक है, तो here also because they all these compounds they have similar molecular mass. ठीक है, otherwise आप कंपेयर ही नहीं कर पाओगे. ठीक है, तो सिमिलर मॉलिक्यूलर मास है तो सबसे कम किसका होता है, यू नीड टू रिमेम्बर इज हाइड्रोकार्बन, क्योंकि उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोई चांसेस नहीं है. तो द फर्स्ट मॉलिक्यूल विल बी एन ब्यूटेन. देन यू हैड ईथर. ठीक है, बिकॉज देयर इज 1 ऑक्सीजन हियर, सो
it is ethoxyethane. Then you will have aldehyde, and then okay. So because in this aldehyde also there are some chances of hydrogen bonding. That is why pentanol का the boiling point will be more than ethoxyethane, that is ether, और alcohol का और या फिर phenol का, that is always the highest boiling point. Okay, so this is the trend or this is the solution for this case. Now coming to the chemical reaction. Okay, so see in the case of alcohols or phenols there are two possibilities. ठीक है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? दिस इज ROH. ठीक है, so there are two possibilities, as in the first case the bond between O and H will be broken. ठीक है, तो कुछ ऐसे रिएक्शंस होंगे इन अल्कोहल जिसमें कि OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा. ठीक है, सो यू शुड अंडरस्टैंड कि जब OH बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या होगा कि यू विल गेट RO माइनस एंड H प्लस. ठीक है, तो RO माइनस विल बी अ न्यूक्लियोफाइल. ठीक है, तो इसका मतलब इन सच रिएक्शन alcohol या फिर phenol whatever is the case, they act as न्यूक्लियोफाइल. न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? Nu माइनस, इनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, Nu माइनस. ठीक है, so whenever OH bond is breaking down, then the alcohol will react as nucleophile. And the second possibility is whenever the CO bond is broken, मतलब जो alkyl group का कार्बन एंड जो O है उसका बॉन्ड, whenever that CO bond is being broken down, they will act as electrophile. क्यों? क्योंकि तब you will have R plus and OH minus. ठीक है, तो इस केस में ये जो अल्कोहलिक ये वाला जो ग्रुप होगा अल्काइल ग्रुप, दैट विल बी प्लस. ठीक है, तो दे विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल. ठीक है, बट इन द रिएक्शंस व्हाट हैपेंस इज प्रोटोनेटेड अल्कोहल्स होते हैं. प्रोटोनेटेड अल्कोहल मतलब द अल्कोहल्स व्हिच हैव एक्सेप्टेड H प्लस, मतलब प्रोटॉन उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, प्रोटॉन ऐड हो गया है. ठीक है, तो उनको बोलते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल्स. दे रिएक्ट इन दिस मैनर. ठीक है, अल्कोहल में H प्लस ऐड कर दिया तो वो एज अ इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट करेगा. So we will categorize the chemical reactions in two categories. That is, first the reactions which are involving the cleavage of OH bond. ठीक है, and another is the reactions which involve the cleavage of CO bond. ठीक है, तो हमने उसको इस तरीके से categorize किया है, and then there will be sub categories that we will discuss. So the first thing that we will discuss today is reactions involving the cleavage of OH bond. ठीक है, now the first category, or you can say the subcategory here, is the reaction with metals. ठीक है, so the alcohols or phenols, they react with active metals like sodium, potassium and aluminum to give the alkoxides or phenoxide. So the reactions which are related to these are, suppose you have an alcohol ROH and you have reacted it with sodium, so it will form RONA and hydrogen. ठीक है, or you can say you have another alcohol
and you have reacted this with aluminum. So because aluminum has a valency of 3, because ठीक है Al+3 होता है ना, तो it will get attached to 3 groups as a whole. एक ग्रुप तो यही है O, ठीक है, तो दिस इज वन ग्रुप और ये Al, बैलेंसिंग ना। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि AlCl3 मतलब Al has the valency of 3+3 no, so Al always it gets attached to 3 groups, ठीक है, 3 क्लोरीन एटम्स जब अटैच हो जाता है तो दिस इज known as AlCl3, ठीक है। Here it is getting attached to this third butyl group, है ना। तो ये यहाँ पे जो ग्रुप होगा एक यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा और एक यहाँ पे, दैट इज वाई दिस 3 इज कमिंग हियर, ठीक है। And next, when you react this with phenol, this is phenol plus Na. This will give ONA and hydrogen. तो जब अल्कोहल के साथ में रिएक्शन हो रहा है तो वट एवर यू आर गेटिंग इज एल्कोक्साइड, ठीक है। जैसे ये RONA है, ये क्या है? सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है। मान लो यहाँ पे R की जगह मिथाइल ग्रुप होता, दैट विल बी सोडियम मेथॉक्साइड, ठीक है। यहाँ पे एल्यूमिनियम की जगह पे थर्ड ब्यूटाइल, यहाँ पे R की जगह पे थर्ड ब्यूटाइल ग्रुप है, सो दिस इज एल्यूमिनियम थर्ड ब्यूटॉक्साइड, ठीक है। जो भी ग्रुप लगा है वो, ठीक है। तो इसका जो नॉमेनक्लेचर होता है वो कैसा होता है? मेटल, जो भी मेटल है, और फिर एल्कोक्साइड, मतलब ALK की जगह पे आपको एल्काइल ग्रुप लगाना है और ऑक्साइड विल बी सेम। वैसे सिमिलरली यहाँ पे विल बी मेटल, मतलब सोडियम फेनॉक्साइड, क्योंकि यहाँ पे ये वाला ग्रुप विल बी सेम, so this is metal phenoxide, ठीक है। so these are the products are alkoxide and phenoxide. अच्छा, similarly you can also react phenols with the aqueous sodium hydroxide, ठीक है। तो यहाँ पे Na की जगह पे you are reacting the phenols with aqueous NaOH, sodium hydroxide, then also you will get the same product, मतलब तभी भी sodium peroxide will form. So these reactions, ठीक है, what can you analyze or what can you observe from these reactions is that the alcohols and phenols are acidic in nature. क्यों acidic? क्यों? What are acids? I mean, acids, they are simply defined in a way that whatever compound or whatever molecules that can give H plus or they can donate H plus or a proton, they are known as acids, ठीक है। जितनी आसानी से वो लोग प्रोटॉन को डोनेट करेंगे उतने ही बेटर एसिड दे विल बी, ठीक है। so if they are able to donate proton very easily then they will be better acid. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि OH बॉन्ड टूट रहा है, इसका मतलब O माइनस और H प्लस, तो H प्लस इज बीइंग गिवन अवे, ठीक है। तो H प्लस वो लोग डोनेट कर रहे हैं, H प्लस जा रहा है, इसका मतलब है कि दे आर एसिड, ठीक है। तो एक्चुअल में दे आर ब्रॉन्ज्ड एसिड। देर आर मैनी डेफिनेशंस ऑफ एसिड, ठीक है, कि बहुत सारे लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन दी है एसिड की, एंड so one of them is bronzed acids. I am not going into the detail of other acids. You can go, I mean there are Lewis acids, there are Lewis bases and all, ठीक है। तो आप जाके उनकी डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आई एम टॉकिंग अबाउट ब्रॉन्ज्ड एसिड। ब्रॉन्ज्ड एसिड क्या होते हैं? दे कैन डोनेट अ प्रोटॉन टू अ स्ट्रॉन्गर बेस, ठीक है। तो दे आर डोनेटिंग अ प्रोटॉन। ठीक है, so you need to remember this कि alcohols and phenols they are bronzed acid। अगर कोई पूछे कि what which type of acids are these, so they are bronzed acids, ठीक है। so the next kind of reaction or the subcategory that we'll be talking about is
acidity of alcohol. Okay, some of the reactions which take place with alcohol, they are because of the acidity of alcohol. अब acidity जो होती है alcohol की, वो क्यों होती है? It is because of the polar nature of the OH bond. ठीक है, polar nature मतलब polar nature क्या होता है? Whenever we say that the bond is polarized, मतलब that is because of the electronegativity difference between the two atoms that are forming a bond. तो यहाँ पे क्या है कि ये जो OH bond है, that involves a big electronegativity difference between O and H atom, जिसकी वजह से जो O होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो इट विल अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, दीज बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, विच आर पार्ट ऑफ अ बॉन्ड। और ये जो H है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है, तो ये अट्रैक्ट नहीं कर पाता है। दैट मीन्स कि ये जो बॉन्ड हो जाता है OH बॉन्ड, दैट इज पोलराइज्ड। ठीक है, तो इस पोलराइज होने की वजह से ये O माइनस पे और ये H प्लस पे जाके ब्रेक हो जाता है। और दैट इज द रीजन these alcohols, they can donate a proton and they become acid. ठीक है, now here also you need to remember some points. I will divide this in some points just for the sake of understanding. So what happens is कि जो भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, ठीक है, they increase the electron density on the oxygen. मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप is being attached to the oxygen atom, वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा एंड इट विल इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द ऑक्सीजन। तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द ऑक्सीजन इंक्रीज करेगी, तो द पोलैरिटी जो होगी ना, वो कम हो जाएगी। जो पोलैरिटी होगी OH बॉन्ड की, दैट विल डिक्रीज एंड देयरफॉर एसिड स्ट्रेंथ भी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो क्या होता है कि ये जो एसिडिटी है वो किसकी वजह से है? पोलैरिटी की वजह से। जितना ज्यादा पोलर होगा बॉन्ड, या फिर जितना ज्यादा पोलराइज्ड होगा बॉन्ड, OH बॉन्ड, उतना ज्यादा एसिडिटी या फिर एसिडिक नेचर होगा अल्कोहल का। ठीक है, तो अगर कभी भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप O से अटैच्ड है और O के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इंक्रीजिंग, दैट विल ऑलवेज डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, सो लेट मी write down the reason, because this is very important. You will need this understanding when you are given the questions, when you need to arrange different kind of molecules on the increasing order of their acidic strength. ठीक है, तो ये जो एसिडिक स्ट्रेंथ वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये बहुत पूछे जाते हैं, चाहे एग्जाम्स हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, कहीं पे भी ये दीज आर वेरी कॉमन क्वेश्चंस। ठीक है, तो बहुत ध्यान से यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। तो आई एम राइटिंग इट डाउन। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग group that is being attached to O, that will increase the electron density on oxygen atom। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा? जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, तो पोलर नेचर कम हो जाएगा, और यू कैन से कि पोलैरिटी डिक्रीजेस, एंड दिस इन टर्न डिक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ, और यू कैन से द एसिडिटी। ठीक है, नाउ अभी OH ग्रुप से हम क्या, हम वी आर टॉकिंग अबाउट द अल्कोहल, राइट? तो यू मस्ट बी नोइंग दैट जो R ग्रुप होता है या फिर जो अल्काइल ग्रुप होता है ना, दैट शोज द प्लस आई इफेक्ट, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है। प्लस आई इफेक्ट क्या होता है कि whenever a group is releasing electrons, it has a tendency to release electrons। ठीक है, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि वो रिपेल करता है इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, जब वो रिपेल करेगा तो जो दूसरी तरफ वाला ग्रुप होगा ना, उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे। तो ऐसा ऐसा भी समझ सकते हैं। अदरवाइज इन सिंपल टर्म्स इट इज सेड that the alkyl group is a electron releasing group।
ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करता है। ठीक है, तो whenever this R is being attached to this, suppose this is the alcohol, ठीक है, तो ये जो बॉन्ड होगा, this R group, it will increase the electron density। ठीक है, पोलैरिटी कम करेगा और एसिडिटी को भी कम करेगा, एसिडिक नेचर कम होगा। नाउ सपोज दिस इज अ 1 डिग्री अल्कोहल। नाउ सपोज यू आर गिवन अ 2 डिग्री अल्कोहल, मतलब दो R ग्रुप लगे हुए हैं। तो अब ये वाला भी इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ये वाला भी रिलीज करेगा। ठीक है, तो ये पोलैरिटी को और कम कर देगा, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ को और कम कर देगा। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, तो बिकॉज दे आर 3 ग्रुप्स, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और कम और बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द ऑक्सीजन एटम विल इंक्रीज एंड सो द एसिडिक स्ट्रेंथ विल डिक्रीज। ठीक है, if we talk about the order of the acidic strength, it will be this way, मतलब 3 डिग्री alcohols are the least acidic in nature। बिकॉज ऑफ दिस इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, ये भी रीजन भी याद रखना है आपको। प्राइमरी अल्कोहल्स आर द मोस्ट एसिडिक। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से। नाउ सेकेंड पॉइंट दैट यू नीड टू रिमेम्बर इज कि अल्कोहल्स आर वीकर एसिड देन वाटर। ठीक है, वाटर भी एसिडिक होता है, यू ऑल नो, एज आई टोल्ड यू दैट व्हाट इज एन एसिड, व्हेनेवर अ कंपाउंड इज एबल, इट हैज अ कैपेबिलिटी टू डोनेट अ प्रोटॉन, उसको एसिड बोल देते हैं। ठीक है, तो वाटर ऑल्सो, वो जब व्हेनेवर इट विल गेट आयनाइज्ड, इट विल ब्रेक इनटू H प्लस एंड O माइनस, इट विल डिसोसिएट, और जब ये प्रोटॉन डोनेट कर रहा है दैट मीन्स इट इज एन एसिड। ठीक है, तो अल्कोहल दे आर वीकर एसिड देन वाटर। ऐसा क्यों बोलते हैं? बिकॉज whenever this alkoxide ion, what is alkoxide ion? RO minus, ठीक है, it is reacted with water, we get alcohol। मतलब ये जो रिएक्शन है ना, ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि देखो, आ, कि RO माइनस इज alkoxide ion that is accepting a proton, मतलब कहाँ से प्रोटॉन? दिस H प्लस, ये वाला जो H प्लस है ये यहाँ जा रहा है। ठीक है, that is accepting a proton and it is getting converted to ROH, एंड ये जो वाटर है दैट इज डोनेटिंग अ प्रोटॉन, that is donating a proton and that is converting into OH minus। ठीक है, so that means because water is a better proton donor। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? water is a better proton donor, so that is why it's a better acid। Similarly, okay, let me write it down first, or water is donating a proton ना, so that means water is better acid, and ये जो alkoxide ion है that is accepting a proton, so it is a better base, just opposite। ठीक है, now there is also another important point, that is alcohols, they can also act as a bronze state bases because they have unshared electron pairs on the oxygen atom। ठीक है, दो unshared electron pairs होते हैं ऑक्सीजन से, which they can donate। ठीक है, वो लोग डोनेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, so that is why alcohols they can also act as bronze state bases। ठीक है, तो अभी हमने ऊपर क्या देखा था कि अल्कोहल ब्रॉन्स्टेड एसिड्स होते हैं बिकॉज दे कैन डोनेट अ प्रोटॉन, but they can also be bronze bases because they can accept a proton and they can become
protonated alcohol. Abhi, when we will discuss about another kind of reactions, that is where CO bond is being broken down, we will see the reactions where they act as Bronsted bases. ठीक है, तो अभी अगर clear नहीं है, so it will get clear when when we are discussing about those reactions. ठीक है, so in the acidity of alcohol, we need to remember 2 points. First, कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है, जैसे कि अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, तो जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप लगे होंगे ना अल्फा कार्बन पे, the more number of alkyl groups which are connected to the alpha carbon, the least acidity will be there. Okay, and primary alcohols are the best alcohols, or they have the most acidic strength. And secondly, alcohols are weaker acid than water. ठीक है, तो water a better acid होता है. Now we are coming to acidity of phenol. अभी हमने क्या पढ़ा, acidity of alcohol. ठीक है, now we come to the third subcategory. तो यहाँ पे भी फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड कि जो एसिडिटी होती है उसके क्या सिमिलर ट्रेंड्स होते हैं, एंड देन वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट द रीजन. सी, यू ऑल मस्ट बी नोइंग दैट बेंजीन रिंग इट अंडरगोज रेजोनेंस. ठीक है, रेजोनेंस में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है ना, दैट इज डीलोकलाइज्ड, बिकॉज व्हेन यू ड्रॉ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर, जो नेगेटिव चार्ज होता है वो एक जगह पे नहीं रहता. ठीक है, अलग अलग हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स में द नेगेटिव चार्ज जो होता है वो अलग अलग कार्बन एटम पे होता है. दैट मीन्स इन सिंपल टर्म्स वी कैन से दैट द नेगेटिव चार्ज इज delocalized in the case of benzene ring. ठीक है, तो बेंजीन रिंग जो होती है ना, दैट एक्ट एज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. ठीक है, तो अगर हम लोग सिंपली रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो क्या हो जाएगा, लेट्स ड्रॉ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ फेनॉल. ठीक है, तो ये OH है, दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, and these are the pi bonds. तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं दे विल गो इन दिस बॉन्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर इससे जा रहे हैं तो दिस विल पॉजिटिवली चार्ज. फाइन, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस बॉन्ड में गए हैं, और ये वाले इलेक्ट्रॉन पे यहाँ चले जाते हैं, तो ये नेगेटिव आ गया, और बाकी विल रिमेन द सेम. नाउ नेक्स्ट हाइब्रिड स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस. ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव, ठीक है. सो दीस आर द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आर द हाइब्रिड स्ट्रक्चर. अब इसमें क्या है कि ये जो बेंजीन रिंग है ना, ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन से जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ऑन द ऑक्सीजन एटम, ये उन्हें विड्रॉ कर रहा है. ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये दे आर, बिकॉज वो लोग रेजोनेंस में पार्ट ले रहे हैं ना, बिकॉज दे आर पार्टिसिपेटिंग इन द रेजोनेंस. ठीक है, दैट इज व्हाई बेंजीन रिंग इज कंसीडर्ड एज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. ठीक है, और अभी जस्ट हमने अल्कोहल्स के केस में क्या डिस्कस किया कि जब भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, ठीक है, तो एसिडिटी कम हो जाती है और द एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो कम हो जाती है. ठीक है, यहाँ पे क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो दैट विल इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेगा ऑक्सीजन आइटम से. दैट विल इंक्रीज द दैट विल डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द ऑक्सीजन. दैट विल इंक्रीज द पोलैरिटी of the OH bond, and that will increase the acidic strength. ठीक है, तो the first point you need to remember is the benzene ring है, it acts as an electron withdrawing group. I am writing it in short, electron withdrawing group. So it increases the acidic strength.
तो दिस इज द रीजन कि जो फेनॉल्स होते हैं ना, दे आर मोर एसिडिक देन एज कम्पेयर टू दी अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल में जो ग्रुप लगा हुआ है वो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर रहे हैं। लेकिन इन द केस ऑफ फिनॉल, फिनॉल में जो ग्रुप लगा हुआ है, जो एराइल ग्रुप लगा हुआ है, वो रेजोनेंस की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है। ठीक है, तो जस्ट द ऑपोजिट इज हैपनिंग इन द टू केसेस। इसी वजह से एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स इज मोर एज कम्पेयर टू अल्कोहल। ठीक है, दिस वाज द रीजन एंड द पॉइंट इज phenols are stronger acids than alcohols and water. ठीक है, now there can be other, there are also other reasons जो कि which are behind this phenomena, behind this strong acidity of phenol. First of all, the sp2 hybridized alpha carbon of phenol, it is more electronegative. ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन वाले कॉन्सेप्ट में अभी we discussed कि जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है, मतलब जो दैट इज अ पार्ट ऑफ अ डबल बॉन्ड, दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, एंड बिकॉज इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट विल डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द ऑक्सीजन एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब इट अट्रैक्ट द ऑक्सीजन, सॉरी, इट अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक है, तो ये जो कार्बन है, ये जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, दैट विल डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन, that will increase the polarity and increase the acidity. ठीक है, also the delocalization of the negative charge, जो अभी हमने डिस्कस किया कि जो नेगेटिव चार्ज है ये पूरी रिंग में घूम रहे हैं। ठीक है, इट इज जस्ट, इट इज नॉट लोकलाइज्ड एट अ प्लेस। जैसे कि एल्कोक्साइड आयन में नेगेटिव चार्ज लोकलाइज रहता है, वो हमेशा ऑक्सीजन एटम पे रहता है, बट हियर इन द केस ऑफ फेनॉक्साइड आयन, ठीक है, तो द नेगेटिव चार्ज इज डीलोकलाइज। ठीक है, एंड दिस इज द रीजन why the phenoxide ion is more stable than the alkoxide ion। मतलब in जो phenoxide ion होता है, that is more stable than the alkoxide ion। ठीक है, तो जब ये ज्यादा स्टेबल है, तो इसका मतलब है कि फिनॉल्स के केस में आयनाइजेशन जल्दी होगा। ठीक है, भाई जब फिनॉक्साइड बनेगा तो दैट इज मोर स्टेबल, तो इसका मतलब है कि फिनॉल्स विल आर मोर केपेबल ऑफ बीइंग आयनाइज्ड। ठीक है, तो 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 बेसिकली क्या हुआ कि इसके जो है तीन रीजन है। फर्स्ट रीजन इज कि बेंजीन इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देता है ऑक्सीजन से। नाउ सेकंड रीजन इज द sp2 हाइब्रिडाइज्ड अल्फा कार्बन। ये जो अल्फा कार्बन है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, तो जब वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो वो भी इट विल आल्सो अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स इटसेल्फ and it will also increase the acidic strength. And the third reason that you can say is the delocalization of negative charge due to resonance. ठीक है, delocalization of the negative charge is because of resonance causes phenoxide ion to be more stable as compared to the alkoxide ion. ठीक है, so these are the three reasons which cause the phenols to be stronger acids than alcohol and water. ठीक है, तो यही तीन रीजन की वजह से phenols are a better acid. Now, also we will talk about the substituted phenol. Substituted phenol मतलब whenever some groups, जैसे कि क्लोरीन लग सकता, talking about the haloarenes, no? Halogens can be there, or nitro group can be there, or OH group can be there, another OH। ठीक है, तो ये कैसे अफेक्ट करते हैं उसकी एसिडिटी को। तो सी व्हाट हैपेंस इज
द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जैसे कि अभी हमने, क्योंकि बेंजीन भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है, फ्रॉम द OH, OH ग्रुप से, ठीक है। तो इफ सम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज प्रेजेंट, इट इंक्रीजेस द पोलैरिटी एंड इट इंक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ। सेम रीजन है वही, कि जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा वो ऑन द ऑक्सीजन एटम, दैट विल increase the polarity and that will increase the acidic strength, ठीक है। Now this effect will be more pronounced, or this will be more effective when that electron withdrawing group is attached to the ortho or the para position, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? इट इज बिकॉज यू सी इन दीज रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, ये जो नेगेटिव चार्ज है, आप देखो कि ये सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे आ रहा है। इसका जो डीलोकलाइजेशन है ना, ये सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे आ रहा है, मेटा पोजिशन पे नेगेटिव चार्ज कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। So whenever a electron withdrawing group is attached at the ortho or the para position, it will take away, it will withdraw the electron density, ठीक है। जो भी इस ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है उसको विड्रॉ करेगा एंड इट विल इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ और द एसिडिटी ऑफ फिनॉल, ठीक है। तो वैसे भी एसिडिटी ऑफ फिनॉल ज्यादा होती है, ठीक है। अब अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तब तो और भी ज्यादा होगी, ठीक है। मतलब नॉर्मल फिनॉल से कंपेयर टू द सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल, सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल में अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और वो भी ऑर्थो और पैरा पे है, ठीक है, तो उसकी एसिडिटी ज्यादा होगी, ठीक है। दिस इज द सेकेंड पॉइंट दैट यू नीड टू रिमेम्बर सब्स्टिट्यूटेड के केस में। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट ऑर्थो या फिर पैरा इंक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। रीजन आई हैव एक्सप्लेन्ड इट टू यू। नाउ ऑल्सो दैट ग्रुप कैन बी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ठीक है। मतलब अगर सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है तो वो डिक्रीज कर देगा एसिडिक स्ट्रेंथ को, ठीक है, जस्ट उल्टा ऑपोजिट, ठीक है। और अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इट डिक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। सो दीज आर टू पॉइंट्स दैट यू नीड टू रिमेम्बर, ठीक है। जब आपको whenever you are given the question related to the order of acidic strength of phenols, पहला कि phenols are stronger acids than alcohols and water, एंड दूसरा ये जो सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल है उसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, ठीक है। सो दीज वर द all this was the content which was related to the acidity. Now in the next lecture we will do several questions because ये जो acidic nature वाला portion है, this is very important and it is asked almost everywhere, ठीक है। So we will discuss a few questions related to these and then we will move on to the next topic. So this is all for today. Thank you.